Water is by far the commonest liquid on Earth. Naturally, the shortage of water never arises in our mind. With the new millennium, water, the most essential component of civilization, might get scarce in many countries. We all know that 3/4 of the Earth is water, but only less than 1% exists as fresh water, like streams, rivers, lakes, aquifers, and canals, and the rest consists of seawater which mankind cannot use. Owing to the population boom, freshwater demands will continuously be multiplied to cater to a better lifestyle in urban as well as rural areas. Currently, most of the countries around the world are facing water shortages. By 2025, more countries, including India, will be pushed into this dread list if we are not careful and conscious about it. The quantity of water available is not the same everywhere in the world because of irregular rainfall and climatic changes. There are several reasons for the water crisis. First is the inefficient way in which we use water. Second, irrigation without proper usage and control creates wastage on a prodigal scale. Much of the water trickles away or simply evaporates before it can do any good. Third, we do not save our freshwater stock properly. Forests are important water regulators. Their soil structure acts as nature's sponge, soaking up water and releasing it slowly throughout the year. They contribute to reliable river flow, replenish groundwater supplies, reduce soil erosion, and release moisture into the atmosphere. Since deforestation is on the rise, the sediment washed from the hills clogs waterways, lifts the riverbed, leading to continuous soil erosion and floods. Coastal water pollution in the world's oceans result from contaminants carried there by fresh water. Industrial and municipal pollution continue to pose a significant threat.
The facilities to treat wastewater are not adequate in any city in India. Presently, a bare minimum of the wastewater generated is treated. The rest is discharged as it is into our water bodies. Polluted water is a natural gateway for waterborne diseases. Water-related diseases create human tragedy, killing millions of people each year. Human lives are being put at risk because of arsenic in the water supply. Conflicts can arise, especially where countries with rapidly growing population and limited arable land collide over access to shared freshwater resources. Right on top of the reasons behind the water supply crisis is the inability of governments in developing countries to regulate, manage, and invest in water. Otherwise, the world will increasingly witness the new phenomenon of water refugees. Millions of people will be forced to leave their homes in search of water, or because regional conflicts over water would turn violent as shortages grow. Rainwater has to be stored effectively to discharge it efficiently in times of need. Since water is most essential for sustaining life on Earth, water issues need delicate monitoring and careful handling. The basic nature of water resources development implies that although the government has to play a major role, it cannot or should not be handled exclusively by the government agencies alone. Common people should also be involved in this awareness program. Otherwise, we will be gasping and crying our throat hoarse within few days for water. Good afternoon, all of you. Welcome to the online platform of Gujarat Science City, the webinar on World Water Day. Today we are celebrating World Water Day. We all know water is very precious for all of us. In 2021, our theme is valuing water. Today with us, our resource person is Sri K.B. Biswas sir. Sir earned his bachelorate degree BTech in the field of mining engineering from IIT Karanpur in 1980. Sir earned his postgraduate diploma in personal management and industrial relation. Sir is the member of expert
Appreciable Committee, Thermal Power and Coal Mining, Ministry of Forest Climate Change, Government of India. Sir is also former chairman of Central Groundwater Board and Authority, Ministry of Jal Shakti, Government of India. During his career, Sir achieved many awards like Outstanding Leadership Award by Mining Engineering Association of India in year 2050, Professional Excellence Award by Aqua Foundation Delhi in year 2050, Best Achievement Award by Technology Mining Engineering Society Achiever Award by IIT Karampur in year 2016. I would like to request Sir to start our webinar. Sir, please. Thank you, Harshida. First of all, I'll put. Hello, can you listen to me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, best wishes and warm welcome to this World Water Day. See, the United Nations has decided to have this World Water theme, that is valuing of water. सबको ये पता होना चाहिए कि पानी का क्या वैल्यू है. Actually, this World Water Day का जो theme United Nations में decide किया हुआ है, how the people of every nations should understand the value of waters and their uses. First of all, I'll say the water is a very precious commodity. You can say it is a precious mineral, which is more worthy than the jewels and gems. But this is a very finite renewable resources. Unlike the minerals, it is a renewable finite resources. That is a very, very important for everybody. चाहिए ये पानी जो है रिन्यूएबल है लेकिन एक सीमित मात्रा में है. हम लोग सभी जानते हैं वाटर एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट इन द वाटर्स. एज यू नो दैट फर्स्ट प्लैनेट्स में जो पानी आया, जो लाइफ आया, दैट इज इन वाटर. Unfortunately, our planet, in our Earth, water is going, I mean, it is day by day, it is actually reducing the per capita water availability. In India, the increasing stress on availability of water is due to the population explosion and improved standard of living. इंडिया में क्यों पानी आपका कम हो जाना है, इसका मेन कारण है जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ और हमारा जो अर्बनाइजेशन, जो हमें इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड जो हो रहा है, इसका कारण पानी शॉर्टेज हो रहा है. और दूसरा बात है जो टोटल ओवरऑल जो पानी का जो शॉर्टेज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द मैसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट coupled with improper and indiscriminate exploitation of the groundwater resources. तो पहले पानी का वैल्यू सबको पता होना चाहिए. Secondly, let us go for the how much water is available. आप सभी जानते हैं around 70% of the earth area is covered with the water. लेकिन unfortunately 97% of water is saline and 3% water available, which is 2% is there basically in the ice cap in the North Pole and South Pole. Only less than 1% water is available as a fresh water. So आप देख सकते हैं 67% अर्थ सरफेस is covered with water, out of which 97% saline. जो अभी मैं बोल रहा हूँ, only less than 1% आपका. Now India का पर्से में आप देखा जाए, what is our area? Indian area, India का जो total geographical area is around 3.2 million square kilometer, which is around 2.4% of the total area of the world, and 7th largest country. And the population is, if you go, it is a 17.5% of the world population. That is second populous country. Whereas our water availability is only 4%. It's a very important. Water availability of the world, I mean, with respect to the India, it is only 4%. With respect to the 17.5% of the world population. And the main concept that to know about the water uses and the water availability, you have to have a topographical condition also. The water availability depend on the geology and hydrological conditions. So in India, totally around 70% of the hard massive area, where actually water existence is very less. And 30% actually area is consolidated and semi-consolidated. Now आप टोटल देखेंगे तो हमारा कितना पानी मिलता है. As a whole, whether it is a surface water or the ground water, हमें जो टोटल precipitation होता है इंडिया में, it is around 4,000 billion cubic meter. Billion cubic meter means 10 to the power 9.
You can say 4,000 किलोमीटर क्यूब, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर में ऊंचाई लेंगे, जो वॉल्यूम होता है उसके अराउंड 4,000 किलोमीटर क्यूब इज द टोटल प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ द रेनफॉल, इन टर्म्स ऑफ स्नोफॉल, ये टोटल मिला के. लेकिन इसका कुछ पानी ऑटोमेटिकली एवापोरेशन लॉस से ज्यादा होता है, जो एक्चुअली ग्राउंड में गिरता है वो अराउंड 1869 बिलियन क्यूबिक, आउट ऑफ व्हिच इसमें भी काफी सारे लॉस होता है हिल्स में एंड अदर टेरेन में. सो टोटल यूटिलाइजेशन वाटर होता है 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. उसमें जो सरफेस वाटर है 690 बिलियन किलोमीटर एंड ग्राउंड वाटर 433 बिलियन क्यूबिक. सो 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है उसको अंदर में 398 इज अप्रोक्सीमेट यूटिलाइजेबल वाटर एंड एक्चुअली यूजेस 245 ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर में इंडिया में देखिए ग्राउंड वाटर जो आपका कम दिखा रहा है सरफेस वाटर से, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज वेरी वेरी हाई. अराउंड 60% ऑफ इरिगेशन नीड्स जो ग्राउंड वाटर से करते हैं. 85% टू 90% रूरल जो गांव वाला जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर से फीड करता है. शहरी इलाका में 50% अर्बन जो नीड्स है वो आपका ग्राउंड वाटर से करता है. लास्ट 40 इयर्स में जो आप पिछले मतलब 1970 डिकेड से शुरू करेंगे, जो ग्राउंड वाटर आपका करीब 84% इंक्रीज ऑफ नेट इरिगेशन एरिया को आपका जो ग्राउंड वाटर आपका उसमें इनपुट दिया होगा. ये आप कैटेगराइज दे सकता कैसे ब्रेकअप है 4000 से, जैसा भी मैं एक्सप्लेन किया हुआ. नेक्स्ट है पर कैपिटा वाटर एस्टिमेशन. सो आप देखेंगे, मैं इसका पहले एक चला जाता हूँ. These sources of water is basically rainwater and snow melt. So if you consider last 100 years का आपका rainfall statistics is almost constant. कुछ साल में शायद कम ज्यादा हुआ होगा, लेकिन 100 years का एवरेज स्टैटिस्टिक का रेनफॉल इज कांस्टेंट. सो हम बोल सकते हैं जो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर्स को जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. इसलिए मैं बोलता हूँ वाटर इटसेल्फ है finite resources, finite and renewable. Renewable means it is source of renewable is nothing but through the rainwater, rain and snow. Now, जब 2000 हमारा आजादी का बाद after independence in 1950, our per capita water available was more than 5,000 meter cube, which has come down to in 2001 to 2011 census. The projected आपका 1818, 1567 and 2025 में it is expected 1340 and 1140 cubic meters. So you can see in 1950 it was a more than 5,000 cubic meter per head per capita. We will go down to 1140 cubic meter as well. Thus, there is a decreasing trend in the per capita water availability, mainly for drinking purposes due to increase in population expansion, urbanization, industrializations. Now, the UN agenda in 2030 defined 17 sustainable development goals in the United Nations as a plan of actions for people, planet, and prosperity, focusing on target 6 of the SDG, Sustainable Development Goal, water and sanitation. So, 2030 global goal, everyone will have a safe water to drink. But is it possible? Now we'll go in details. So water scenario we have discussed. In 2010, say our water consumption demand was 710 billion cubic meter, and it will go in 2050 1180, which will be much higher than the actual water available. Now, what is the need? So now I'll go for the sectoral demand, agriculture. In world-wise, if you consider the world-wise, पानी का क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा यूज है एग्रीकल्चर. इवन इन एशिया में भी जाएंगे तो अभी हम देखेंगे एशिया में दो कौम है यूरोप से भी, लेकिन सबसे ज्यादा कंजम्पशन है एग्रीकल्चर. नाउ आपका डिमांड देखिए, करंट यूज में आपको देखिए एग्रीकल्चर में वर्ल्ड का कुछ 69% वाटर यूज आपका एग्रीकल्चर में, यूरोप में 33%, अफ्रीका में 88%, इंडिया में 83%. So Africa and Asia जो है that is agriculture almost same है. Industry में we are only using 12% and 5% as a domestic. So total water consumption in India, maximum focus on the agriculture and then industry and domestic.
Now, development countries in Asia and Africa uses 80 to 90% of the water in agriculture and 5 to 12% water in industrial use. Now, this is the projections by IWMI, that is International Water Management Institute. This total red, this red color is a very, very water scarcity area. And this is also this red, this pink color, yellow color, this is actually economically water scarcity. So 2050, if 2025 even go to up to 2050. So our western part and the central part of India will be very water, physically water scarcity. And rest eastern part and some southern part of our India, it will be economically water scarcity. Now, so as I told earlier, so total water actually in our India, the no doubt that 690 is the surface water available, 433 is the groundwater available. But use of groundwater is very, very high in India. It is giving around 60% irrigation support by the groundwater and 85 to 90% in rural drinking water and around 50% in the urban drinking water. So that shows groundwater is a very, very important for our India. So groundwater is a hidden resource. It is a relatively easy. Why groundwater is more stage and used? Because it's very easily available to the people. It is a common resource, and basically people consider it is an individual resource. As per the Easement Act, whoever is having the land, still they are having the right to access the groundwater. So million of farmers, they are using their groundwater through their own land. In addition, a depletion parts of India report severe water quality problem. Another issue of the groundwater is the water causing drinking water unemployment. So people are going for the groundwater. There is a pivotal shift from groundwater development to the groundwater management. So now our important aspect is that we should shift our groundwater development. Groundwater development means here is the groundwater withdrawal to the groundwater management. Now, whether the groundwater, even the surface water, is available equally or uniformly to the India? No. It is a very much spatial distributions of availability of groundwater resources uneven. There is a lot of variations of the availability of the water according to the geographical conditions. The increasing dependence on groundwater as a reliable source of water has resulted in indiscriminate extraction, and sustainability of groundwater sources is jeopardized. Now, this is a technical matter how the water is available. Groundwater is available either in the aquifer system or in hard rock area through the fracture and fissures. Now, in our country, hydrogeological, if you define, we are having a porous formations where water is available, more water is available. There is unconsolidated and semi-consolidated formation. Fissured formations, that is very hard formations. So 70% of the area is hard formations and 30% area is basically porous formations. Now it is a very important the water rainfall area. So monsoon onset map, you see the rainfall pattern in the southwestern monsoon, it goes. So rainfall actually, it would go from the western to our eastern part. The rainfall actually from 100 millimeter to is more than 3,000 millimeter rainfall. So there is a lot of variation in rainfall. So when there is a variation of the rainfall, the availability of water is also not uniform. Now, role of groundwater in our Indian economy is that I told earlier, 60% of our groundwater has given input to the irrigations. And say we had the green revolution, we said that from since 1974 to 1994 we have the green revolutions. So there actually this groundwater has played a very, very important, and groundwater area lands in India have increased by 105%. In contrast, the area of surface water irrigated the land rise by 28%. So surface water has contributed 28% of irrigated area, and whereas in the groundwater through groundwater is by 105%. Groundwater now creates more agriculture wealth than any other irrigation sources in 93. For example, groundwater uses generated rupees 130 billion, while surface water uses generated 150 billion.
So this is a complete reversal from the correspondence values of rupees 21 billion and rupees 70 billion in 1970. According to World Bank, Government of India estimated. So our GDP, actually groundwater gives a contribution to our GDP around 9% GDP growth. So this is our basically formations, different formation is the in our India. Now, live stress, how much water is available through our live storage in dams and all this thing. So 1950 we have only 15.6 billion cubic meter, which has come up to the 225 billion meter, and another 64 BCM under construction and 180 BCM contemplated. Annual food grain production increased from 51 million tons to 250 million tons, and irrigation potential created is about 140 million hectare against the 22.6 million hectares due to this water. Now I have talked about the water available in India. Now what is our role? Now the role is, since the water is a finite resources, so we require a major water management challenge. That is our main issue. How to go to the water management. So natural situations, what is our main challenges? First is the natural situation, tropical monsoon climate. Large scale spatial and temporal variations in water availability, what I discussed. Recurring droughts and frequent floods, that is our natural hazard. Now, human managerial and development challenges. Increasing water demand and falling per capita availability. Since it is a finite resource and you're increasing due to the population increase, so definitely the per capita water availability is reducing. Water use and energy efficiency, that is a deterioration of water quality. Water quality, both surface and groundwater, is also water quality deteriorating. Reduction of deterioration of available resource, loss of surface storage. Whenever surface storage is good, people are more dependent on the groundwater. Increasing competition complete within the sectors. Under the inefficient utilization of irrigation potential. Over-exploitation and depletion of groundwater resources, that is also a management challenge, is very, very big issues. Water logging and soil salinity in irrigated land. Fragmentation of management of water, management of shared resources. Lack of a spatial inventory for large number of water infrastructure. Outdated water resource potential estimate. Significant change in land use, land cover, demographic and utilization pattern in past few decades, and climate change and impact. Climate change, I'll tell you about the climate changes. Though I have told that last 100 years, if you go for the total precipitation, that is rainfall and snowfall, that is almost constant. But the variation is there. Now there is a erratic rainfall. Recently, you must have heard there is a cloud burst, lot of thunderstorms. So the total volume of water, precipitation may be same, but the rainfall duration, it has been reduced. Earlier, say the monsoon period, there are periods it used to rain around 120 days, 90 to 120 days. That has reduced to the 80 days or 60 days, like that. So what happened? If it is there is a uniform rainfall, so storing of the water either in surface or groundwater is very, very efficient. But if there is a very heavy flood and the shower, this is called the cloud burst and all, the most of the water goes west, it goes ultimately to the sea. So that is a very important factor nowadays in the rainfall pattern. Now, the national water policy. See, issue related to the water government had not been addressed. National Water Policy 2012, they brought the water policy. So where the government, they have not addressed adequately in mismanagement of water resources has led to a critical situation in many parts of the country. Groundwater through community resource is still perceived as an individual property and is exploited inequitably without any consideration to its sustainability, leading to its over-exploitation several areas. Another thing is the water is a state subject. Water is a state subject, and the groundwater is basically treated as an individual and a personal property. As per the old Easement Act, the government is not yet modified, not yet changed. So people are having a right to draw the water in their own land, particularly in the rural area. That is a very, setback to our policy.
So water needs to be managed as a common pool community, resource held by the state under public trust doctrine to assist food security, support livelihood, and ensure equitable and sustainable development of all. Good governance through transparent information decision making is crucial to the objective of equity, social justice, and sustainability. Meaningful, intensive participation, transparency, accountability should guide decision making and regulation of water resources in the country. Now, key groundwater management challenges. Excessive and skewed groundwater. So, people are withdrawing their waters without knowing their resource and their availability. They are thinking it is their own property. Even the people think that it is a God-gifted property. So, that is the main reasons for the excessive withdrawal. Inefficient use of water for the agriculture. So people sometimes going for flood irrigation through the groundwater. Reduction in sustainability of groundwater sources, especially in hard rocks. So sustainability in the hard rock is very important. And so without looking in the sustainability of the groundwater, people are going on withdrawing the groundwater पैसे उठाते रहे. So हमें ये देखना है जो पहले क्या क्या इसमें सेटबैक है, जो ज्यादातर पानी उठा रहा है, प्लस आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेरी एफिशिएंसी लाना है, इनको एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज कर वो ना सोच के फ्लड इरिगेशन जा रहा है, और उसके बाद हार्ड रॉक एरिया में से जो पानी का सस्टेनेबिलिटी ना देख से कंटिन्यूअस उठा रहा है. और दूसरा बात है इनएडिक्वेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म. जो गवर्नमेंट को ग्राउंड वाटर उठाने के लिए जो कानून अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सितंबर 2020 में एक नोटिफिकेशन लाया, एक नोटिफाई किया हुआ ग्राउंड वाटर विड्रॉल के लिए बहुत सारे कानून लाया, पैसा देना पड़ेगा पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज के लिए. एंड नेक्स्ट है नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी. सिंस ग्राउंड वाटर आपका जो मनाया जाता है ये कॉमन पूल रिसोर्स है, किसी को एक्चुअली ग्राउंड वाटर जमीन जरूर सबको डिमार्केशन है किसका जमीन कितना है, लेकिन ग्राउंड वाटर जो आदमी उठा रहा है ही मे बी विड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम हिज नेबर. इसलिए ग्राउंड वाटर ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज ए कॉमन पूल रिसोर्स और इनको भी कॉमन पूल एंड सोसाइटी बेसिस पर इसको मैनेजमेंट होना चाहिए. एंड सेकेंडली ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी खराब हो जा रहा है, बहुत जगह एक्सेसिव विड्रॉल का कारण भी हो रहा है. तो ग्राउंड वाटर का भी एक बड़ा इश्यू आ गया जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी खराब हो जा रहा है. सरफेस वाटर भी जैसे बहुत जगह खराब हो रहा है ड्यू टू द वेस्ट वाटर एंड ये सब कारण. और दूसरा ग्राउंड वाटर में हम जो ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स असेसमेंट करता है उसमें करीब करीब 30% जो एरिया है वो आपका क्रिटिकल एरिया, सेमी क्रिटिकल एंड सैलाइन एरिया में आ गया. और बाकी जो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन कॉजेज इम्प्लिकेशन. सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो है ना, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो जैसे मोर देन 100% जो पानी विड्रॉ कर रहा है उसको ओवर एक्सप्लॉइटेड बोला जाता है. ओवर एक्सप्लॉइटेशन का इसका मेन रीजन है जो जैसे रिप्लेशन जो बारिश का पानी जो ग्राउंड वाटर में गया से 100 लीटर्स गया, लेकिन ग्राउंड वाटर विड्रॉ कर रहा है मोर देन 100 मीटर. इसका मतलब है वो रिजर्व स्टॉक से ले रहा है. क्रिटिकल एरिया है जहां पर आपका विड्रॉल है मोर देन 90%, लेस देन 100%. सेमी क्रिटिकल एरिया है जहां पर मोर देन 70%, लेस देन 70%, लेस देन 90%. और सेफ एरिया है जो लेस देन 70% विड्रॉल है. नाउ ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत बड़ा इसमें पहले इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल. अच्छा, दूसरा बाया इंक्रीज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल एक्सेसिबिलिटी, डिटेरियोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी. कुछ जगह पर पानी ज्यादा उठने के कारण जैसे कोस्टल एरिया में है सी वाटर इंग्रेशन हो रहा है. अच्छा, आप ज्यादा पानी उठाने में जो शैलो जो डाग वेस्ट है वो भी आपका ड्राई अप हो जा रहा है. डिक्रीज इन बेस फ्लो. ग्राउंड वाटर जो कॉन्स्टेंटली जैसे सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर भी स्लोली बट इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवर्ड द डीप डायरेक्शन, लेकिन वो भी आपका बेस फ्लो धीरे धीरे कम हो जा रहा है. और आपका इन मेनी स्मॉल रिवर्स में आपका जो ग्राउंड वाटर आपका सपोर्ट देता है. इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन इन विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर. जब पानी नीचे जा रहा है तो आपका पंपिंग कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ रहा है. इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फुटप्रिंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड डीजल पंप. अच्छा, प्राइवेट ओनरशिप. इंडिया में देखिए कोई प्राइवेट वेल्स के ऊपर कंट्रोल ना होने से आज का दिन में मोर देन 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ का ऊपर आपका ट्यूबवेल्स है. बोल सकता पार 40 से 50 आदमी के अंदर एक एक ट्यूबवेल है. एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रेगुलेटरी मेजर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. जो आदमी को ग्राउंड वाटर के बारे में
लैक ऑफ नॉलेज का कारण इसका आपका जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन। नाउ रीजंस फॉर ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइनिंग, ये हमें पहले भी बोला हुआ, ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस, चेंज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। आजकल क्या होता है, आदमी ज्यादातर कैश क्रॉप में जा रहा है। कैश क्रॉप, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द हाउ मच वाटर इट इज कंज्यूम, बट दे आर गोइंग फॉर द कैश क्रॉप्स। सो एक्चुअली क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस। अब से पंजाब हरियाणा सबसे ग्राउंड वाटर स्टेट है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी। दिस आर द एरिया, आप देखा जाए जब पहले, अब यहाँ से 40-50 years एरिया, they used to, I mean, produce only the wheat, cornflower, etc. But nowadays they are going for the paddy. Paddy is the major cash crops, and paddy is basically only, it is requires a huge quantity of water, and here actually water availability is very less. So these are the area people are going without considering their climate conditions and water availability. They are straight away going for the cash crop, which is causing great damage to the groundwater, even in the surface water. And secondly, scanty rainfall in arid and semi-arid area. Definitely, just as semi-arid and semi-arid areas, the Rajasthan, Gujarat, some part of the Haryana, इस शहरों में आपका बहुत कम बारिश होता है। लार्ज ग्राउंड वाटर अदर सोर्स, आज जहां पर दूसरा कोई सोर्स नहीं है, इवन इन राजस्थान हरियाणा दूसरा सोर्स नहीं है, इसलिए ज्यादातर जा रहा है ग्राउंड वाटर पर। और दूसरा, कुछ स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्री और मिनिमम रेट करने से सब आदमी एक्चुअली पंप सेट लगा रहा है। एंड दिस जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ए रैपिड अर्बनाइजेशन। Is a geogenic contamination. Now, in India, if you say that district-wise, we are having around more than 600 districts, out of which arsenic 87 districts are affected, fluoride 317 districts, nitrate 387 districts, iron 302 districts. So, इतना district आपका polluted है. Now, initiating groundwater management intervention. So, आप जो मैं पहले बोल रहा था, हमारा status of groundwater governance के लिए हमें क्या करना है? Article 246 of the Indian Constitution places water resources in the legislative jurisdictions of the state. So water is basically a state subject. Water supply, irrigation, canal, drainage, and embankments, water storage, water power, and water purchase status. And the most worst part that what I was discussing, मैं जो पहले बोल रहा था, हमारा देखिए 1882 का एक इसमें टैक्ट है जो अभी भी इंडिया में नहीं है, इससे बड़ा बुरा हाल नहीं है। इसमें है ग्राउंड वाटर टू इज बीन कनेक्टेड टू ए लैंड एंड ग्रांट्स लैंड ओनर्स एंड अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द लैंड। सो इसका कारण जो इंडिया में क्यों इतना ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है, सरफेस वाटर होते हुए भी आप देखिए मोर देन 60% इरिगेशन आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है इरिगेशन। इसका मेन कारण है जो छोटा फार्मर है उसका तो एक कैनल का पानी लाने में जो तकलीफ होता है, वो अपना खेती से पानी उठाने इतना तकलीफ नहीं होता, इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज दे थिंक दिस इज देयर ओन राइट, ओन प्रॉपर्टी। और बड़ा फार्मर है वो खाली आपका कमर्शियल फार्मिंग में वो भी नहीं देखते, हमें देखता है जो ग्राउंड वाटर में ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए ज्यादातर ये जो इसमें सबसे बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट है जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन का। So there is no provision in Article 246 of the Constitution
to grant power to states to legislate on environmental matters, reserving the area of law for the central government via the reserve clause of Article 240. ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इस डेवलपमेंट मीन्स एक्चुअली यहाँ पर विड्रॉल होना चाहिए. सो ग्राउंड वाटर विड्रॉल इन द कंट्री इज डायरेक्टली मैनेज्ड बाय स्टेक होल्डर. सो ग्राउंड वाटर विड्रॉल का जो मैनेजमेंट एक्चुअली सरकारी तरफ से कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर इनिशिएटिव प्रॉपर फ्रूटफुल आई मीन अभी भी ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो कंस्ट्रक्टिव एक्शन है अभी ले रहा है रिसेंटली. अदरवाइज ग्राउंड वाटर का टोटली जो भी मैनेजमेंट है वो स्टेक होल्डर अपना आप ही जो करता है यही पॉसिबल. नाउ सो आप ओवरऑल क्या ग्राउंड वाटर बोलेंगे और क्या सरफेस वाटर. सो हमें दो आपका तरीका मैनेजमेंट करना है. सो द फर्स्ट से हमें क्या बोला इज अ फाइनाइट रिसोर्स. यहाँ पर ज्यादातर हम वाटर यूज कर रहे हैं, ज्यादातर ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन, ग्राउंड वाटर बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. सो हमारा अभी दो तरीके से आप मैनेजमेंट करना है वाटर को. कैसे आइदर कोम यूज करना है और पानी को सेव करना है. सो देयर आर टू वे ऑफ management. One is supply side management, one is demand side management. So supply side management जाएंगे तो ground water development in the area with suboptimal utilizations. Development of new and hitro untapped sources of groundwater. So groundwater के लिए अभी ऐसा कोई particular जैसे आर्सेनिक एरिया में देखा गया जब फर्स्ट दो एक्वीफर्स है जैसे बंगाल से लेके यूपी बिहार even start up to the Punjab also arsenic effective है in the Ganga basin. So first two layers जो है पहले मतलब डार्क ऑयल जोन के जो नेक्स्ट एक्वीफर्स है वो मेनली arsenic affected है. So below that there is a fresh I mean uncontaminated aquifer is there. So इसलिए हमारा ऐसा कोई सोर्सेज भी एक्वीफर्स निकालना पड़ेगा जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं. अच्छा एक्सटेंसिव रिसर्च टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर सोर्स बाय. अभी जो नीचे का पानी ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए आपको सप्लाई साइड में क्या करना चाहिए. वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू रिजर्वेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन टैप, चेक डैम, फार्म पॉन्ड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, स्कैट ग्रोव्स एक्सेट्रा टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडी. सब वाटर बॉडीज को बचाना है. इनको कैसे रिसर्च करना. अच्छा दूसरा बात है जो नेचुरल रिसर्च जोन है जितना भी एक एरिया इंडिया में जियोग्राफिकली हाइड्रोजियोग्राफिकल कंडीशन आपका देखते हुए देयर आर सर्टेन जैसे फुट ऑफ द हिमालयस, भब्बर बेल्ट, ये सब एरिया जैसे अरावली फूट्स है, फुट ऑफ द अरावलियन रीजन्स, ये सब प्लेन में आपका ज्यादातर आपका जो बारिश होता है वो पानी डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में रिसर्च करता है. सो अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट द नेचुरल ग्राउंड वाटर रिसर्च. जहाँ पर जो पानी देखिए अब सब जगह जो जियोग्राफिकल एंड जो हाइड्रोजियोग्राफिकल कंडीशन है सब जगह का पानी जैसे इमीडिएटली अंडरग्राउंड में जाएगा इससे कोई नहीं है. अंडरग्राउंड पर्टिकुलरली नेचुरल रिसर्च जो एरिया है जो है भब्बर है, तोरा है, बाजाडाज है महाराष्ट्र, अरावली एंड रूट्स है हरियाणा, फ्लैट प्लेन है, मार्शेस एंड वेटलैंड्स एक्सेट्रा ऑफ द कंट्री. दिस एरिया शुड बी प्रोटेक्टेड, डिक्लेयर एनवायरनमेंट सेंसिटिव जोन. ये गवर्नमेंट का एक बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए डिक्लेयर करके इनको कर दे. प्लस कौन सा now groundwater resource management tools. Now we go for the demand side management. So supply side management क्या कर सकता within the resource, how to protect the resource and the foolproof water supply. That is actually supply side limited. Now another is the very important nowadays considering the limited resource, that is finite resource, demand side management. That you require a very, very high awareness program among the people that how to reduce the requirement of the water. So promotion of demand side measures, regulation of groundwater withdrawal को regulate करना, regulation for subsidized electricity, financing for new TVs. So कुछ जगह पर हमें restrict भी होना पड़ेगा, control भी करना पड़ेगा, कुछ जगह awareness भी लाना पड़ेगा. Extensive education in water budgeting based management to ensure sustainable existence of groundwater. And change in cropping pattern suitable to water available. जब मैं पहले भी बोल रहा था हमें हर जगह इंडिया का एक बड़ा कमियां क्या है, हर जगह everywhere everybody wants everything. That is the great drawback in our system. सब आदमी सब जगह जाता है कितना कमाओ. अभी वेस्टर्न स्टेट का भी चाहता है जहाँ हम पैडी लगाओ, जैसे पंजाब हरियाणा. मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी
Though they are giving the maximum rice production, but they should stop it considering the water availability. So हमें क्रॉपिंग पैटर्न उस टाइप जाना चाहिए जहां पर सुइटेबल है पानी का हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से. क्रिएशन ऑफ मार्केट्स ऑन टू, तो आप आदमी जब फार्मर्स आप क्लाइमेट कोई चेंज करेंगे तो उसके लिए आपके मार्केट सपोर्ट भी चाहिए. और दूसरा बात है जो हम लोग जो फ्लड इरिगेशन है वाटर को इतना आपका बचाने के लिए सबसे फ्लड इरिगेशन इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए. आप ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में जाना चाहिए. रिड्यूसिंग वाटर लॉसेस. नाउ अभी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लिया लास्ट आया जो चेयरमैन सिंस December 2014 till the 17 May 17 2017. So मैं एक्चुअली उस टाइम से हम लोग का एक्वीफायर मैपिंग चला हुआ था. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट एस्टेब्लिश नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम. नेशनल एक्वीफायर मैपिंग का मेन गोल था, टारगेट था, everybody should be able to know how much such water available under his feet. इसका मतलब ये है हर एक आदमी को पता होना चाहिए हमारा खेत का अंदर में नीचे कितना पानी है. जो ग्राउंड वाटर उठाने के लिए सब आदमी सोचता है हमारा ये भगवान में दिया हुआ है जो मर्जी उठा लो, लेकिन ये एक्यूम का जो एक्वीफायर मैपिंग का मेन परसेप्शन ये था जो हर मतलब एरिया में ब्लॉक वाइज इसमें कितना पानी अवेलेबल है, कितना डेप्थ हो और क्या क्वालिटी. सो एवरीबॉडी शुड बी एबल टू नो द वाटर अवेलेबिलिटी क्वालिटिवली एंड क्वांटिटी. कितना पानी है एवं किस क्वालिटी का पानी है उसका बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे कितना पानी उठाना है. उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए. नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लाया था. इस हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट बेसिकली लाया था जो टू नो अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस एंड द वाटर अवेलेबिलिटी. अच्छा, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्लान बाद में इसको वाटर भूजल योजना के हिसाब से लागू हुआ जिसमें एक्चुअली वाटर इज ट्रीटेड एज वन कंपोनेंट. सो इज वाटर भूजल योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव लिया. 9 स्टेट में सर्टेन ब्लॉक्स को लिया, पर्टिकुलरली ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया को और कुछ वाटर क्वालिटीज एरिया को कंसिडर किया, ओवर क्वालिटी इश्यूज एरिया को, जिसमें टोटल सॉल्यूशंस, टोटल साइड्स मींस टोटल डिमांड साइड्स एंड सप्लाई साइड्स एंड वाटर अवेलेबल लेके इनको मैनेजमेंट करके टोटल इनको सॉल्यूशन करना है. जैसे आप लोग का पता है महाराष्ट्र में एक है हिबड़े बाजार आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर लोकली गांव वाला इनको सॉल्यूशन करता है. जो टोटल पानी कितना बारिश हुआ उस हिसाब से उनका गांव का मुखिया जो प्रधान है वो डिसाइड करता है किसको कितना, कौन सा इस साल में कौन सा क्रॉप आपका लोग खेती करेंगे और किसको कितना पानी जाएगा उस हिसाब से डिसाइड करता है. दैट इज द टोटल सॉल्यूशन and conversion of activities and resources from various governance scheme to bring total water. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या वाटर्स जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट डील करता था. अभी जैसे 2019 का बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मस्ट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इन वन डिपार्टमेंट एज ए जल शक्ति. So अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो आपका वाटर को डील कर. तो जितना भी स्कीम है वाटर रिलेटेड स्कीम है उसको कन्वर्जेंस करके एक ही फंड अंडर वन अम्ब्रेला इनको चलाने का कोशिश कर रहा है. सो कन्वर्जेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम टू ब्रिंग टोटल वाटर सिक्योरिटी. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का तरफ से जितना भी मैनुअल्स, गाइडलाइंस, आर्टिफिशियल रिसर्च, हाउ टू प्लस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव. नेक्स्ट अब जैसे सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे. हमें टोटल है जैसे ग्राउंड वाटर में नीचे जो भी है जो ग्राउंड वाटर उसको एक्वीफायर स्टोरेज बनाएंगे. इनका मेन क्या रिसोर्स होगा, एक नेचुरल रिसर्च होता है जब बारिश का बाद और स्नो मेल्टिंग के बाद जो पानी अंदर में जाता है. दूसरा होता है जब पानी शॉर्टेज का कारण हम आर्टिफिशियली बारिश का पानी या सब उनको हार्वेस्ट करके अंडरग्राउंड में ले सकते हैं. तीसरा आना जो नॉर्मल सीपेज आता है जो इरिगेशन लैंड से और बाकी जगह से जो सीपेज होता है, दैट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर इन द एक्वीफायर. और नेक्स्ट सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के लिए आपका जो क्या का आपका वाटर फॉर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल, स्प्रिंग, सरफेस वाटर, वेटलैंड्स, कोस्टल जोन्स, ये आपका वाटर फॉर द इन्वायरमेंट. एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एंड दिस इज water for the people, this is human benefits. So this is a sustainable, how sustainable groundwater development.
Now, are cities sustainable in the water needs and water management? बहुत सारे शहर है. अभी रिसेंटली जैसे मैं जब चेयरमैन था देखा राजस्थान में देयर आर लॉट ऑफ सिटीज ले अंडर द जापान जाइका प्लान लेके सिटीज डेवलप किया विदाउट नोइंग द सोर्सेज ऑफ वाटर. People are crying for the water. There is no surface water, no groundwater, but they are developing the cities. So natural depletion of groundwater is slow and is unable to keep pace with the excessive continuous exploitation. So cities को develop करने के लिए आपका this has resulted in declining groundwater level. In order to augment the natural supply of groundwater, artificial reserves become important. Local urban water demand exceeds always local renewable rates. Import the water via rivers or contours. The high population density causes high local emissions of wastewater and relevant substances. Downwater stream waters and user may be efficient irrespective. Large technical systems show a high inertia and are assumed to be not effective in their resource demand and eco balance. अभी मैं cities का कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कैसे जैसे दिल्ली में shallow minor aquifer increasing mainly private use. Major aquifer increase utilized under the private use. Deep major aquifers. Now groundwater in the cities. अब cities how develop करने से कैसे आपका पानी आ जाता है देखिए. Now rainwater harvesting artificial to groundwater. Now benefits of artificial research of groundwater in smart cities. आप कोई भी city develop करेंगे तो उसके लिए arrest groundwater level decline. आप पानी जब ग्राउंड वाटर से लेंगे तो ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो. सस्टेन ग्राउंड वाटर सप्लाई. कंट्रोल ऑफ सैलिनिटी इंग्रेशन पर्टिकुलरली कोस्टल सिटीज में ग्राउंड वाटर ज्यादा डाउन जाएगा तो सैलिनिटी इंग्रेशन. लो लैंड इज वेस्टेज फॉर स्टोरेज पर्पस एंड नो पॉपुलेशन displacement is involved. Mitigate flash flood, soil erosion, silting of reserve, improve quality services. Now there are two areas मैं particularly बात कर रहा हूँ. इन दिल्ली में एक जाएगा सिद्धार्थ नगर जहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू है वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम. वाटर लॉगिंग कैसे हुआ? उस एरिया में सरफेस वाटर सप्लाई दिया और ग्राउंड वाटर सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ. आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है इससे वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन ऑल्सो. सो नीचे भी इतना बेसमेंट है मतलब जो ग्राउंड वाटर फ्लो टू द डाउन दैट हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड. ग्राउंड वाटर विड्रॉल भी कम हुआ सरफेस वाटर सप्लाई का करें. And secondly, groundwater flow is being obstructed. Ultimately, इनका groundwater आपका ऊपर आने लग गया. Is a flash. So groundwater इसलिए हम सजेस्ट किया हो जो groundwater withdrawal होना चाहिए. और एक मैं प्रॉब्लम आपका दिखाता हूँ जोधपुर सिटीज में. जोधपुर सिटी में ऐसा एक फॉर्मेशन नीचे है जो हार्ड फॉर्मेशन है. उसका पानी ज्यादातर उसका नीचे नहीं जाता. So normal seepage water even जो रेन वाटर होता है जो वहां पर जगह रुक जाता है. पहले पानी उसको ग्राउंड वाटर विड्रॉल करता है लेकिन इंदिरा गांधी कैनल आने के बाद दे पीपल आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैनल सिस्टम. सो आपका ग्राउंड वाटर इतना हो गया जो आप ग्राउंड वाटर से आप पानी यूजिंग आउट हो रहा है मतलब बाहर आने लग गया. सो ये आपका ये प्रॉब्लम आपका लोकली आ गया. सो स्ट्रेटेजी फॉर वाटर सप्लाई फॉर द फ्यूचर सिटीज. सो फ्यूचर सिटीज के लिए हमें एक डेवलपमेंट करना. So water supply and sanitation policy, integrated governance of water supply and sanitation, public-private partnership. अभी कोई भी होगा जो public-private partnership है ना. And दूसरा है supply side management and demand side management. So last of all, so groundwater management for healthy cities. Cities within the arid and semi-arid area with alluvial, Gujarat, Rajasthan, Haryana, where water table is very deep. One side sewerage, dry toilet compositing toilet, cesspool, septic tank, and subsurface infiltration, soak pits, soil pond, etc. or sewerage on the contrary, cities in alluvial or gangetic basins, that is UP, Bihar, West Bengal, should have good sewerage system with ideally no leakage to avoid. Better sewerage system is prerequisite for the sustainable groundwater use of the cities. Cities with lined sewerage network, properly treated urban wastewater could then serve as a new source of water. So, last of all, I should say everybody of the country, I mean, the country
और पानी बचाना, पानी सेव करना हर एक का कर्तव्य है, गवर्नमेंट लेवल पर है, एवरी इंडिविजुअल लेवल पर सबको कॉमन एफर्ट से पानी को सेव करना है। वैल्यू बिकॉज पानी आपका लिमिटेड रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको बचाना रखना है। और आपका पोल्यूशन, पानी को भी पोल्यूशन फ्री रखना है। सबका लिए मेरा अनुरोध है, हर आदमी की ड्यूटी है, पानी के सरफेस वाटर है, कोई ड्रिंकिंग वाटर है, अपना कोई एक्टिविटीज ऐसा ना करे जो पानी पोल्यूट हो। ठीक है, जियोजेनिक कंटेमिनेशन है जिसके लिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेशन जिसका लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, इसको नहीं होना चाहिए। और मिनिमम कंजम्पशन, हाउ टू सेव द वाटर, दैट इज द मेन इशू, the more important and more valuable than even the any mineral in future. For listening. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Thank you so much, sir, to spend your valuable time with us. Thank you so much, sir. Sir, there is one question. Okay. Is there any technique to increase groundwater? Is there any artificial technique? Artificial technique is artificial research. See, where there is a over-exploitation, your withdrawal is more than the replenishment volume. There we should go for the artificial research, because you know, whenever there is a rainfall, जहाँ बारिश होता है, कुछ बारिश ऑटोमेटिकली आपका फ्लैश फ्लड होकर निकल जाता है, और कुछ बारिश का पानी आपने हो जाता है। जो पानी आपका कमिटेड फ्लो है, उसका कुछ पानी को आप आर्टिफिशियल उनका हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर में रिसर्च कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनली देखेंगे आपका बहुत सारे जगह है, बावलीज है, अब राजस्थान में, गुजरात में बहुत जगह देखेंगे आपका आर्टिफिशियल रिसर्च स्ट्रक्चर पाएगा। सो ग्राउंड वाटर आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो ग्राउंड वाटर है उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं जाता, लेकिन जहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है वहां पर आर्टिफिशियल रिसर्च करने का परमिशन होना चाहिए। Thank you so much, sir, for such a nice informative session. Thank you very much. Okay, thank you everybody. Thank you everybody. Thank you all the participants to join our webinar on Gujarat Science City webinar. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, thank you.